So let me have a quick check so that we can move forward. Right. So let me have a quick check. Yes, I think everything seems to be fine. Right. So yes, आज हम थोड़ा सुबह सुबह मिल रहे हैं and that is because आपकी डिमांड थी है कि we should meet like early in the morning. So I hope everything seems to be fine. The view of the newspaper is good now and other things. So hello Aisha, hello Vmaker. Okay, you just finished the reading of the newspaper. Very good, very good. Right. So we had some like slight change in our what we can say pattern, है ना? So हम उसको थोड़ा सा different version में वो करेंगे. We are going to have some new way of discussing and dealing these things. And yes, थोड़ी सी मुझे सर्दी है तो I hope ये ज़्यादा परेशान ना करे. Okay, so let's start with what we are having today, है ना? So एक एक करके उन सब के बारे में बात करते हैं क्या कह रहा है न्यूज़पेपर क्या कह रही नहीं. सो जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर में दो तीन मेजर जो न्यूज़ हैं वो देखने को मिलती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज हरियाणा गवर्नमेंट should grant the relief to academic राइट सुप्रीम कोर्ट. ये अशोक यूनिवर्सिटी वाला केस है जो सब everybody is like aware of it. Then again the pollution and other thing. Then Suresh Kalmari, one of the former minister who was accused of the this thing, uh, like for a scam. That is where this thing he dies. And U.S. Venezuela actions are most unlawful. This is a very good editorial. I have read it and other things. So moving on one by one, how and what we are going to discuss. सबसे पहले बात करते हैं किसकी? One of the most talked news की that is SIR. Yes, Special Intensive Revision. ओके आयशा कह रहा है सर डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं क्या. आई थिंक यू शुड मेक नोट्स लाइक बिकॉज नोट्स आर समथिंग जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करते हैं. सो इफ देर आर समथिंग विच यू आर लाइक हैविंग इन योर शॉर्ट नोट्स इन योर नोटबुक सो यू आर लाइक यू वांट टू टेक अ ब्रेक. बातें करने के बाद हम चाय पीने बैठ गए. चाय पीते पीते आपने वो नोटबुक उठाई और आपने 2-4 दिन के जो आपके शॉर्ट नोट्स थे वो रिवाइज कर लिए. So that makes sense. Like it, the regular reading which helps you. Okay. So, Election Commission tells Supreme Court it has duty to weed out the foreigner. Now, what was actually like special intensive revision? What is the things going on between the Supreme Court, Election Commission of India and opposition? अगर उसकी बात करें तो थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं. 2026 का अभी नया साल शुरू हुआ है तो वहाँ पे क्या क्या चीजें हुई हैं. 6th of Jan, right? Yes, they publish a draft list. A draft, more precisely, like electoral roll list for the state like UP. So draft list उन्होंने publish की किसके लिए? यूपी के लिए. Then is in that particular draft list they have like approximate 2.89 crore voters, right, to be deleted. Yes, 2.89 crore voters जो थे उनको उन्होंने क्या किया? डिलीट किया. सो दैट इज वन थिंग जिसके कारण ये थोड़ा सा डिबेट क्या हुई और ज्यादा पॉप्ड आउट होगी कि इस तरीके से होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था. Right. And then they also provided a list that on the like जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो 6th of March को क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी. These were some particular things जो कल के दिन का अपडेट था. So we make a what all the factual information are important for SIR and EC. We are discussing it. थोड़ा सा अभी अपन सेट करते हैं इनको. So 6th of March, they gave a final date, right? Now, what exactly this particular editorial tells you about is how and what. थोड़ा सा इसको रब करके डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा. और ठीक है. So these were some facts जो लास्ट इसमें आया था. So there is particular election commission of India
राइट एंड देन देयर इज अपोजिशन जो इस चीज को क्या कर रही है अच्छे से नहीं ले रही है सो देयर इज सम पर्टिकुलर डिबेट and some particular thing which is going on in Supreme Court. So yesterday, like I read live law and some other website and some news channels as well. So what exactly things were there? So अगर बात करें Election Commission of India की, so Rakesh Dwivedi, who's representing right Election Commission of India in Supreme Court, he says that the Supreme Court, sorry, Election Commission of India have all these right under Article 324 and 327 of Indian Constitution that empowers commission in election matter, electoral matter. Right. So he gave a like strictly one line answer that जो Constitution of India है उसका Article 324 and 327 they give Election Commission of India all the kinds of right and they empower commission for the electoral. So if they want to have a citizen centric right or like moreover like clear voters right clear voter list then they can go for it. On the other half जो opposition है उनकी तरफ से एक रिमार्क आया था that was from advocate अभिषेक मनु सिंघवी जिनका ये कहना था कि जो लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है वो किसके पास होना चाहिए पार्लियामेंट के पास होना चाहिए ऑल्सो जो डेरेक ओब्रायन है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर 6 जनवरी राइट इन्होंने ये बोला है कि दिस पर्टिकुलर वर्क is of SIR is not opaque and they have deleted 58 lakh voter from the West Bengal itself. And also 6th of January wala jo 2.89 hai, that was also one of the major highlight for that. Now, what court said in this matter उसकी बात करें तो सबसे पहले उन्होंने डेडलाइन बढ़ाने की बात की आई एम टॉकिंग अबाउट द केस फिर हम इस पे आते हैं राइट कि वो जो sympathetic view है that was their statement so take a sympathetic view and extend the deadline for submitting the claims and objection by the 15th of January. So जो भी individual voters है who thinks they are not part of electoral list then they can claim their submission and objection by the 15th of January. सेकंड आधार वाला तो अपना हो ही चुका था एंड लास्ट वन जो मेन पर्टिकुलर अभी डायरेक्टिव्स हैं उसमें आई है द थिंग्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी यस they said election commission must disclose the specific reason for the deletion and provide a reasonable opportunity for individual to defend their status in electoral list. So they again suggested transparency, right? कि जो भी चीजें हैं जिस तरीके से आपने डिलीट किया किसी वोटर को तो you should actually mention the reasonable reason for that. Moving on, what is debate going on? राइट यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज है वो ये है कि सिटीजनशिप का स्टेटस या सिटीजनशिप एक्ट जो है वो क्या कहता है सो पीपल आर सेइंग दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड कंडक्ट SIR फॉर द इलेक्टोरल लॉ नॉट फॉर वेरीफाइंग द सिटीजनशिप there are particular people who actually talks about NRC. This is one of the primary phase of NRC. But Information of India की तरफ से आया है, NRC includes all the citizen while we are conducting SIR for those people who are eligible to vote, that is 18 plus. Right. So there are three major matters जो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं कोर्ट में. एक तो है पावर. Yes. The Election Commission of India कहना है कि they are kind of this power of SIR is derived directly from the Article 324 of Indian Constitution. While petitioners जो हैं, जो oppositions हैं, उनका कहना है Election Commission of India is acting as a vigilant neighbor. ये हमारे पड़ोसी की तरह, vigilant पड़ोसी की तरह जो है वो behave कर रहे हैं. Right? Another particular thing which is discussed is citizenship. Yes. तो सिटीजनशिप के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि दे आर लाइक इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू बार फॉरेनर्स फ्रॉम द इलेक्शन और बार दोस पीपल हु आर हैविंग मल्टीपल नेम्स और मल्टीपल what we can say places well, multiple voter ID card so citizenship is not something which we are dealing with the foreigners and to weed out foreigners and we are verifying the voters why the opposition says SIR is a disguised NRC.
So उनके बीच में ये पर्टिकुलर डिबेट चल रही है. एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी. They says कि the technology we are using is sufficient enough. They are saying it's not sufficient enough. नहीं तो इतना ज्यादा वो नहीं. तो दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल. तो लास्ट के उसमें जो पर्टिकुलर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, उसमें काफी बढ़िया चीजें निकल के आई हैं. मेक श्योर कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट्स हैं, है ना, एंड जो सिटीजनशिप का स्टेटस दिखाती हैं उनके बारे में, एंड द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 324 327 की बात हो रही है, व्हाट इज इट सेइंग, व्हाट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955. You have to make sure you have to follow all these facts for your notes and for your knowledge. Right. So that was our first article to be discussed. Then moving on, अगर थोड़ी थोड़ी बात करें, right? So this particular thing again, Chacha Trump, right? Uh, Chacha Trump is behaving like circuit of Munna Bhai MBBS. I hope you watched that film, right? There is this film of first part Munna Bhai MBBS where he went to a hostel room and he find out the room very small. So he tells संजय दत्त, मतलब आइला भाई ये रूम तो ये कमरा तो शुरू होते ही खत्म होता है. तो अपन क्या करते हैं, ये जो बाजू वाली दीवार है उसको तोड़ के बाजू वाला कमरा अंदर ले लेते हैं, उधर बाटता बिटता बनाएंगे. So recently what they did was they took over Venezuela. Then they decided to go for Greenland. They also mentioned the name of Iran and some other particular country, right? So this is something जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है. So people are telling them to shut up, and especially जो Danish Prime Minister हैं, right? उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि if America tries to take over the Greenland, that would be the end of a NATO alliance from the Denmark itself, right? So there is also a controversy in software they're using this. Yeah, they said that they mentioned about the technology. They said it is sufficient enough, while opposition is saying no, right? So that is one thing. And others, अगर बात करें तो उसके लिए अपन डिस्कस करेंगे. Now, इसके बाद जो मेन चीज थी वो यहाँ पे आई. इंदौर का जो डायरिया केस है वो कहाँ क्या कहानी कह रहा है. So High Court criticized MP government insensitive remark. We have discussed this. There is a constituency in Indore, right? Bhagiratpura, right? And Bhagiratpura constituency had this contaminated water supplied from Indore Municipal Corporation. And until now, there is a data of 17 people died into that particular contaminated water. Okay. And there are some insensitive remarks and response from the political leaders, whatever was the reason and other thing. So these are the things जो इस समय discuss हो रही थी, and High Court emphasized the MP government remark on this. The court summoned Chief Secretary, asked him to share the detail of action taken to prevent such like tragedies. Says the tragedy has tarnished the city image. Obviously, Indore is the cleanest city of India from last, I guess, 8 years. Right? So yes, there are some particular things which are being discussed, and it was good. We already had this particular discussion in our previous session about the Indore diarrhea case, so we're not going to discuss much. Moving on to one of the news, that is CBI summons Thalapathy Vijay for Karur stampede. Yes. So what exactly happened? Like कुछ डिटेल ये है कि भाई साहब 12th of January को समन किया गया है सीबीआई ने Thalapathy Vijay, right? He is an actor turned politician, right? And there was this particular incident October, happened on October 30, where 41 people died. Yes, it was like a tragic event. In rally, there were people. He's very popular in his area, right? Yes, and that is the reason that people came out to see him during the rallies and other things. And we lost 41 people. So Supreme, like CBI, the Central Bureau of Investigation, have asked summoned Vijay for questioning to his office on 12th of January. Now, moving on to other, this
particular news is important, and we should actually have uh, discuss, like we should actually, okay, I think there is, so we should actually discuss this. है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं वो सेपरेट स्टेटहुड की जगह डिमांड कर रहे हैं किस चीज की, एक यूनिफाइड जम्मू एंड कश्मीर. So you know, in 2019, right, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो था उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया. सो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, right? And we gave a state legislative assembly to Jammu Kashmir, but no state legislative assembly for the Ladakh. And now, after like 5 years, we had elections, and election ke baad, there is a regular demand of reinstating the statehood of Jammu and Kashmir. So, the idea of separate state of Jammu Kashmir apart from Ladakh was opposed by the National Conference leader, Jammu Kashmir CM, that is, he wants that they both, the union territory, should unite, and we should have a unified Jammu and Kashmir as a right. So that is the thing he wants. He also talks about some ground reality changes, right? And the Ladakh protest. He talks about some other particular thing, how the things happen. Ladakh में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह. Moving on, the most important thing जो recently अभी चल रही है हर जगह पे, that is Ankita Bhandari case. I hope you are aware about it. Like recently, people have outraged and people have came out from their comfort zone to uh, protest against such kind of event. For example, उन्नाव वाला केस हमने डिस्कस किया था, है ना? वैसे ही अंकिता भंडारी केस जो है वो भी पर्टिकुलर अभी वापस न्यूज में है. तो थोड़ा सा मैं पहले सबसे पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्या हुआ था अंकिता भंडारी केस में. So Ankita Bhandari was a 19-year-old girl, and she was working as a receptionist in one of the particular resort near Rishikesh, Vanantara, right? That was the name of a resort. ठीक है? And suddenly, like she was a receptionist, and suddenly she went missing, and that was in 2022 September. If I'm not wrong, 18 September, I guess. Recently काफी पढ़ा इनके बारे में. So September 2022 में she went missing, and after a few days, like 6 days, she was found. Her body was recovered from a Chilla canal, right? And the motive of that particular missing and murder was to provide like extra services to the special guest. She refused it, and according to the sources and the reports of police, the owner, right, that owner thought that this particular scam will come out, so he decided that we should eliminate her, and that is why they murdered her. Now, accused was a Pulkit Arya, right? He's convicted, like, and he's a son of a former BJP leader, that is Vinod Arya. बाद में विनोद आर्या को एक्सपेल कर दिया गया था. Now, what was controversy जो उस टाइम पे हुई थी वो ये थी कि the entire resort was actually demolished. Yes. So, it's not entire part of like resort, not entire resort. I remember, right? So part of resort was demolished shortly after the murder, with the family and protesters alleged that it was attempt to destroy the evidences, right? Then the initial days were those particular टाइम होता है ना कि आप एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी वाले पॉलिटिकल लीडर के साथ एसोसिएटेड है, तो डिलेज होते रहे कहीं एफआईआर में, कहीं दूसरी चीजों में, ना ओवरऑल फैशन में, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी द कंट्रोवर्सी. नो व्हाट रिसेंटली हैपेंड, अगर मैं बात करूं कि क्या अभी हुआ है, तो ये 2022 को केस वापस पाक में इसलिए आया क्योंकि देर आर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ दैट वीआईपी गेस्ट with which this thing happened and Ankita Bandari lost her life. So in 2025 May, last year, the court of Hurdwar actually convicted the Pulkit Arya.
He was a primary accused and son of BJP leader, and his associate, that is Saurabh Bhaskar and Ankit Gupta, there were three people. Right, they sentenced them lifetime imprisonment for murder, criminal conspiracy, and destruction of evidence. And family की demand ये है कि they should have a death penalty. Now 2026 का development ये है कि there is a fresh controversy by Urmila Sanwar. Right, yes, she's a wife of former BJP MLA Suresh Rathore. She released a video and audio clip alleging that senior BJP leader referred as Gattu was the VIP that involved that led to the murder of Ankita Bhandari. बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जो है दुष्यंत कुमार गौतम फाइल्ड डिफेमेशन एंड वगैरह वगैरह सो अभी जो उत्तराखंड के करंट चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पुष्कर सिंह धामी he decided that oh he is open to fresh probe in the Ankita Bhandari case after this kind of protest and opposition from uh, राइट सो दैट वाज व्हाट अंकिता भंडारी केस जो अभी चल रहा है नाउ ये जो प्रोटेस्ट है कंटिन्यू है जो पर्टिकुलर लोग हैं दे वांट अ प्रॉपर सीबीआई प्रूव एंड दे वांट डेथ पेनल्टी फॉर द रेपिस्ट एज वेल ठीक है मूविंग ऑन टू सम अदर न्यूज़ स्टेट न्यूज़ में कुछ खास नहीं था इस बार दिस इज अ गुड न्यूज़ द तेलंगाना शुड यूज एक्चुअली द Telangana and organization in schools and organization in Telangana should use the electric vehicle. Yes, the Telangana government had decided to make uh, this particular thing mandatory that the schools and other organizations they should use the this electric vehicle so that they can reduce the emission and can go for green go green wale concept. Right. Then this one. Right, Ashoka University case. Yes. Uh, for our purpose, CLAT, जहाँ पे law हमारे लिए main चीज होती है, वहाँ पे when it comes to constitutional debates, right, that is something जो हमारे लिए बहुत important हो जाता है, and this is one of the constitutional debate. ठीक है, थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली, है ना? अपन करंट लीगल स्टेटस की बाद में बात करेंगे, पहले बैकग्राउंड बात करते हैं इसकी क्या हुआ. So there is this professor in the Ashoka University, राइट, जिनका नाम था अली खान महमूदाबादी, राइट, ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर क्राइसिस, not crisis technically we beat down like we hell out of Pakistan but during operation Sindoor he made a Facebook post, right, yes, सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट किया एंड पोस्ट जो था वो against the military strike on terrorist installation in Pakistan after the Pahalgam attack. Right? तो उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा रिगार्डिंग द ऑपरेशन सिंदूर एंड दैट पोस्ट वेंट वायरल and people have filed application and report that this was a kind of anti-national thing. Okay, so there were charges on him according to BNS. So then मैं बात करूँ तो there were sections, if I'm not wrong, 152. Yes, act of what we can say, challenging the integrity and sovereignty of India. Then there is 352, I guess. 353, yes. Public mischief का statement conduct करना. Then 79, insulting the modesty of a woman because there was a comment on the female officers of military, right? Then I guess 196 one भी लगी थी for promoting enmity between the different groups. So उनके ऊपर काफी serious allegation लगे after that post, on which he was arrested on 18th of May and then he was granted bail on 21st of May. But initially एक gag order जो था वो impose किया गया था, बाद में एक एसआईटी बनाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एक प्राइमरी इंक्वायरी करती. So what recently happened अगर हम उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे
suggested that Haryana government shows Ashoka University professor Gali Khan Mahmoodawadi facing the criminal investigation for two continuous social media posts on Operation Sindoor. One time magnanimity by giving the sanctional for his criminal operation. So technically, they want that Supreme Court want Haryana government to be a bit lenient, and they should not be treated in such a fashion. So अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो उन्होंने बोला कि जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं दे ही शुड बी गिवन अ बिट लीनियंसी फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट क्योंकि ये वन टाइम हुआ था and they should show like they should sanction grant some sanctions in August 25 जेल जा रहा है वो sanctions नहीं मिलने चाहिए उनके ऊपर उनका जो बाकी पर्टिकुलर राइट है वो तो फॉर नाउ एक रिस्ट्रेनिंग ट्रायल जो है वो चल रहा है जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर अभी डिसीजन पेंडिंग है एंड जुडिशियल ऑब्जर्वेशन के अंडर है जस्टिस सूर्यकांत का ये रिमार्क था कि the professor must also have responsibly and refrain the making of further continuous post. Content on the post. The post was saying that the ऑपरेशन सिंदूर एंड जो फीमेल ऑफिसर्स थे हमारे उनका जो ब्रीफ था राइट दैट वाज अबाउट देम सेइंग कि इट इज नॉट एट ऑल लाइक इट्स अ हिपोक्रेसी कि एक साइड पे हम महिलाओं को और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्या करते हैं काइंड ऑफ वायलेंस एंड उनको सप्रेस करते हैं ऑन द सेकंड हाफ वी प्रेजेंट इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड कंट्री तो वो कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण लोग गुस्सा हो गए थे people were not happy right yes so अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो उनका ये कहना था कि that was dog whistle on the social media post it has appointed SIT उनका ये कहना था कि the phraseology of the nuisance and the dual meaning which may amount the criminal offense so ऐसी कई चीजें उन्होंने बोली and आगे बढ़ते हैं moving on to the next just a minute so overall फैशन में यहाँ पे तो कुछ नया नहीं था एंड अगेन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने हाईलाइट किया मॉडर्न वॉरफेयर को यूएई टॉक्स में एक बार पढ़ना एंड अगेन चाचा ट्रम्प राइट ही इज आउट ऑफ कंट्रोल विद हिज माउथ एंड माइंड तो खैर पहले भी नहीं था कैन ही कीप डूइंग दैट सो वी कैन इग्नोर हिम ही इज समथिंग लाइक कि बोलता ही रहेगा नाउ सोनिया गांधी जो है वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी एंड वी हैव डिस्कस दिस the poll panel published the draft poll for UP, 18.7% names were removed. And इसके अपने discussion किया था कि there are 2.89 crore names that is being deleted. The highest absolute number revolves around SIR for any state. Urban centers saw highest percentage of name being left out. Month-long claims objection in period begins. So उन्होंने अलग-अलग फैशन में लिस्ट बनाए 15.44 करोड़ 2.89 crores were removed 46.23 lakh were deceased 2.17 crore voters were removed because of permanent migration 24.47 voters removed for duplication and 12.88 sorry 55 for the final electoral क्रोज जो है फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट में आए हैं सो ये अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच बट दिस वाज समथिंग जो यूपी के उसमें आया था अगेन सुरेश कलमाड़ी की डेथ हो गई है ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना सम पर्टिकुलर थिंग असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्वा शर्मा उनका कहना है कि जो अटैक है हिंदूज में बांग्लादेश और में हिंदूज के ऊपर दैट इज कंसर्निंग एंड वरीइंग right and this is going on like for long period of time और हमने बात भी की थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं so let's come to the foreign वाले उसमें अच्छा एडिटोरियल वाले पार्ट में ये जो पैराडाइम शिफ्ट या डेंजरस पैराडाइम है जो ट्रम्प ने किया है राइट उसके बारे में आपको करना चाहिए सो फ्रॉम बिंग माय साइड आई एम सजेस्टिंग यू वन पर्टिकुलर सिंपल थिंग इन जो यूएस और वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट है जो हम रिसेंटली अभी देख रहे हैं राइट जिस तरीके से अमेरिका ने किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट को ही अरेस्ट कर लिया काइंड ऑफ किडनैपिंग है एग्जिस्टिंग स्टेट हेड इलेक्टेड स्टेट हेड की
भले इलेक्शन किसी भी तरीके से लाइक अगर मैं अपनी ओपिनियन में बोलूँ तो मादुरो वाज अ डिक्टेटर, है ना? काइंड ऑफ एंड ही वाज सपोज्ड टू गो आउट ऑफ द वेनेजुएला। उसने कुछ टाइम पे वो अपने आप पब्लिक ही वो बोला थी, बट दिस काइंड ऑफ थिंग कि आपने किसी एक स्टेट लाइक कंट्री में घुस के उसके स्टेट हेड को उठा लिया, दैट इज द लैंग्वेज पीपल आर यूजिंग। यू किडनैप्ड हिम फॉर योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, और वहां पे भी आप कह रहे हो कि हम कुछ दिन देश चलाएंगे, ऑयल को वो करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे वगैरह वगैरह। दैट इज समथिंग which is talking about a paradigm shift. So there are people and experts who started talking about the issue of China and Taiwan. Yes, what if Russia goes for a full-scale invasion in Ukraine? What if, like next month, China decided to go for Arunachal Pradesh? So it will keep coming in such a fashion. So people are not very happy with this step of Trump, and you should actually go for reading this particular editorial. And like a lot is being talked, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की कि भैया ऑयल इंटरेस्ट है, पेट्रो डॉलर जो है उसका अपने को क्या करना है, अमेरिका को सेटल करना है, देन somehow the socialist and communist regime he doesn't want. Another thing, he want the blockade for China because China was one of the largest importer of oil from Venezuela. So a lot is being talked, and even Keshav sir took a very good session on this. So you can go with that, you can go for it. Make sure to read it. Then एक एडिटोरियल है शशि थरूर साहब का, and ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, and how like digital tools and smartphones, AI to AI bots and other things are making it better for life, and the right to disconnect isn't always on economy. So एक अच्छा editorial है, आप पढ़ सकते हैं. Then America Venezuela action is most unlawful. We have this discussion already, so agar ho to must like make sure to read it. Then this editorial is about the Iran's reform and re-engage with the world. This is also a good editorial. ईरान में जो चल रहा है प्रोटेस्ट वगैरह उसके ऊपर. I request you to provide us important essays and legal passages for the live law legal publisher. Important judgment. Uh, I'll talk to the team what we can do. Yeah, okay. Chalo, moving on. Uh, again, a central law to protect Aravali. This is something जो कि demand में है, and data shows Venezuela pivot. Just a minute. We are missing one particular thing जो मैं discuss करना चाहता था. Let me have it. No, that's going to come. Okay, first, no Russian oil expected in January. None came from last 3 weeks. Reliance India Limited. Yes. So Reliance Industries जो है उनकी जो जामनगर रिफाइनरी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है. If you don't know about the Jamnagar refinery is world's largest oil refinery, right, in terms of per barrel per day capacity. So they have mentioned this that they are not expecting any Russian oil in January, and from last 3 weeks, they received no Russian oils. Right, this spark again a debate: ki are we under the pressure of USA? Because USA put 25% tariff on us because of import of Russian oil. Yes. So is India somehow managing it wrong or right, वगैरह वगैरह. So that is something जो कि यहाँ पे debate पे है. So make sure to read it. And then we have, wait. Okay. So यहाँ पे हमें दो बड़ी न्यूज मिली. फर्स्ट, यूएस टेक ओवर ऑफ ग्रीनलैंड वुड मार्क द एंड ऑफ नेटो. हम ये डिस्कस करेंगे. सेकंड वन इज वेनेजुएला पार्लियामेंट स्वेयर एज रोड्रिगेज एज द एंट्री प्रेसिडेंट. सो यू आर अवेयर कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो है उन्हें किडनैप करके अमेरिका ले गया. सो उसके बाद की कहानी ये है कि वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट थी
अ, वो जो है एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट काम करेंगे नाउ द प्रॉब्लम राइट इज व्हाट यहाँ पे थोड़ा सा अमेरिकन हिपोक्रेसी भी आप देख सकते हो you know who is our Nobel Peace Prize winner last year. Yes, she was barred from competing election and then उनकी जगह उनके right hand ने compete किया था. So America was supporting that particular party at that time, but now America denied their legitimacy as a leader because of lack of support. So they like made sure that Vice President Delcy Rodriguez was shown as a president. So यहाँ पे थोड़ा सा चीजें वो होंगी एक बार देख लेना ये एक जरूरी पार्ट है कि अमेरिका की हिपोक्रेसी क्या होती है नाउ यूएस टेक ओवर ऑफ ग्रीनलैंड वुड मार्क द एंड ऑफ नेटो सो व्हाट इज ग्रीनलैंड क्या है कहानी इस पे हम थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे रिसेंटली अगेन सेम थिंग ट्रम्प एंड हिज like team and his big mouth decided कि after Venezuela we should go for Greenland. Yeah, they said Greenland is too large to be taken care of by the Denmark, etc., etc. बहुत सारी उन्होंने बातें करी. Right. So, what is Greenland की अगर मैं बात करूं, it is an autonomous territory within the Kingdom of Denmark. Right. And again, autonomous का मतलब ये है कि वहाँ के जो local authorities हैं, local लोग हैं, उनको काफी ज्यादा क्या मिलती है वहाँ पे इंडिपेंडेंटली गवर्न करते हैं वहां पे डेनिश जो किंगडम था उसका डेनमार्क का कोई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था करेंटली अगर मैं बात करूं तो ग्रीनलैंड हैव देयर ओन सॉवरेनिटी राइट यस इट्स अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी फॉरेन अफेयर्स की बात करें एंड डिफेंस की बात करें दीज आर द टू टॉपिक्स व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क रेस्ट दे हैव कंप्लीट self government authority and they have like sovereignty on this सेकंड अगर मैं बात करूं तो जो इंटरनेशनल लॉ है अगर उसकी कंडीशन की बात करें कि इंटरनेशनल लॉज भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका का जो स्टैंड है वो अगर बात करें देयर आर एक्सपर्ट हु सेज कि द यूएस हैज नो लीगल राइट टू टेक ओवर द ग्रीनलैंड and if they do so, this is going to be a violation of international law and territorial integrity. So even international law support this particular thing. And लोग जो opinion तो है वो तो है ही है कि public is not at all happy with the Trump. The local public is showing strong opposition against this statement that it should become the part of USA. भाई कोई रीजन बड़ा है तो उसका ये मतलब नहीं तुम्हारा हो जाता है ना चाचा ट्रम्प का कुछ भी चलता रहता है वी कैन इग्नोर दैट बट हाँ जो डेनमार्क की तरफ से आया है उसकी हम बात करेंगे तो जो डेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि अमेरिका का ग्रीनलैंड टेक ओवर करना वुड एंड द नेटो मिलिट्री अलायंस राइट उन्होंने सीधे तौर पे ये रिस्पॉन्स तब किया जब डोनाल्ड ट्रंप ने renewed call for strategy and mineral rich Arctic island comes under the US control in the aftermath of weekend military operation in Venezuela. तो चाचा ने वही किया जो वो करते हैं वो बैठ के उन्होंने बोल दिया कि अब हमारी उसकी बारी है. Now, do US have some military presence? Yes, the United States is having military presence since World War II, I guess. Yes, उनके पास एक क्या नाम है उसका पिट्टू फिट right, formerly known as Thule Air Base था. For now, it's currently operating as like space station or defense zone का mutual defense agreement है डेनमार्क और यूएसए का अंडर नेटो उसके कारण तो they do have a military presence in Greenland, but that doesn't mean they are going to go full scale invasion and take over the entire island under the US control. Right, so this was good. Make sure to read it. Moving on. Again, in news for Usman Hadi. So, Hadi killed due to political vendetta. Charge should name 17 people in the police. Right, student leader Sharif Usman Hadi, who was killed and under the political vengeance. Right, people are saying कि जो Awami League है, that is uh, part of this particular conspiracy. Formally, they said India is part of this particular conspiracy, and they were like कि हाँ ठीक है चलता रहता है. So yes, these were the recent foreign news. World में again, this is something alarming. अगर मैं बात करूँ, U.S. capture of Venezuela's Maduro
will test the limit of China's diplomatic clout. Yes. The extent of Beijing's success is relying on the criticism of the Washington's action on Venezuela will determine the role of the players as a global dispute resolution. So ये एक अच्छा editorial था. Make sure to read it. And again, एक जगह जब चिंगारी उठती है तो काफी जगहों पे प्रॉब्लम्स आती हैं. Amid Venezuela and Greenland tension, progresses in Ukraine talks uncertain. Yes, America's action on Venezuela actually put him in that particular kind of place कि भाई तू अपनी हरकतें देख ले बाद में हमें समझाना. So if Russia invaded Ukraine, you also invaded Venezuela. Now you are talking about the invasion of like Greenland as well. So yes, the tension on peace talk and whatever improvement was there, somehow it came to ground like zero again, right? So this was the editor like article which was talking about it. Sports doesn't have like much to discuss, but it has like some of the good thing, and that's it. I hope you enjoyed it. This is one of the new pattern we started following. है ना. हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा प्रॉपर न्यूज़पेपर डिस्कशन पे ही काम करते हैं. न्यूज़पेपर पे ही काम करते हैं. तो दैट इज हाउ वी चेंज आवर पैटर्न. जो फैक्ट फाइल है किस तरीके से निकालनी है किस तरीके से बात करनी है तो वो सारी चीजें हमने की. एंड नया पैटर्न कैसा लगा? आई होप यू आर एंजॉयिंग द न्यू पैटर्न. So was the speed was enough or you need like more speed or you want some more particular time? I thought like 40-45 minutes is a good time to discuss the newspaper. आपके तरफ से कोई सजेशन हो तो यू आर वेलकम. I'm seeing the chat box. Any suggestions, guys? If not, then I'll take it as yes. Right. No suggestions? Now I'm seeing the chat box if you want. I think not. I think 100% perfect है चीजें. And in case you have some particular doubt, you might like there are like less number of people in our chat box today because हमने एकदम से सुबह 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 वो कर दिया था. But from tomorrow onwards, we will make sure to maintain this 8 a.m. Schedule. Right. So make sure to be part of it. And I hope you enjoyed the session. And this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करें लाइफ में व्यस्त रहें पढ़ाई में मस्त सॉरी लाइफ में मस्त रहें पढ़ाई में व्यस्त रहें and keep reading and keep making notes. Have a happy learning. Good day, guys.